The greatest bowler that women's cricket has perhaps ever seen. Her last tournament. And I feel sad saying it, but that's the truth. Her last tournament, the World Cup. How do you look back at this journey from Chakdah to Australia, the final journey in New Zealand? So it was just a simple journey, Boryada, because when we started, never thought about it. We are going to, play for India or something else. We started just enjoy the game, don't want to study more, and on to play all the times. And when I saw '97 World Cup, and then I realized this is the sports I wanted to play. And then when you're playing for so long, you will achieve milestones, but as an individual sometimes you'll face ups and downs. But in a way, when you walk in a path, you saw the milestone, you achieve that milestone, and you just move forward because you're representing your country. That is the biggest thing. And most of the time I enjoy that. Most of the time, all the time I enjoy that. So yeah, these things happen. And yeah, it's just 20 years. I don't know when I started, and I'm going too far in my career. Jhulan, let me take you back a little bit. I mean, last 2 years, COVID, bubble life. So talk to me about bubble life and mental health. Well, bubbles is the biggest challenge we face. And honestly speaking, 2019 when COVID outbreaks happened, we never thought about it that we are able to play cricket after 6 months. So when we started in a bubbles, initially we thought, yeah, it's just a bubbles, nothing like it, we can manage. But if you're playing for 6 months at one stage, that means you're going bubbles to another bubbles. That means you're cut off your lifestyle from others. You are just few people each and every day. You are facing those people only in the morning, evening, night, on the ground itself. And you can't eat food from outside all the time. So whatever resource they have, you have to adjust with that, because it's a tough. It's not easy. Don't forget that with bubbles, then there is a quarantine period also there, 10 days. Some countries are 14 days. In India, 6 days, 5 days. So it's quite challenging staying in those room. You're not getting outside fresh air. You're always in a aircon. It's quite tough, quite challenging. That is a things as a players you need to build your character. That is a time your team start getting bond well. That is a time we know each other better than than previous time, because previous time, yes, we spend a lot of time in dressing room, but of the time also you are spending in either in the common room or something like that. That's team bonding also happened, but at the same time is mental fatigue is always there in a bubbles. Young girls, all of a sudden their lives are taken away in that 12 by 12 hotel room. आप मुझे थोड़ा सा समझाइए how difficult, and आपने कैसे बाकी लोगों को help किया? जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे last year, it was absolutely challenging. Because we cannot meet each other from the opening the door, and उनके साथ बात भी नहीं कर सकते थे, इतना strict था. Many times we got warned, but at the same time हम लोग क्या करते थे, हम लोग जूम में ना एक कल्चरल प्रोग्राम जैसा बनाते थे, ग्रुप बना के जूम मीटिंग करते थे, कुछ ना कुछ फन एक्टिविटीज़ करते थे. एंड वी हैव फ्यू यंगस्टर्स लाइक जेमी, हर्लिन, रीचा, देन शेफाली. वी शुड टेल देम, अरुंधति, राधा, वी शुड टेल देम दैट यू क्रिएट समथिंग. सो वी हम लोग सब मिल के एक टाइम पे 2 घंटे के लिए हम लोग सब उसमें इन्वॉल्व रहेंगे एंड सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. सो ये सब चीज़ करते थे. डिफ़िकल्ट था क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज एज ए क्रिकेटर, मैंने पर्टिकुलरली इन वुमेन्स क्रिकेट हम लोग बहुत कम मैचेस खेलते थे. जितने भी मैचेस मिलते थे हम लोग उसमें, अगर हम लोग ये सब चीज़ को अगर एक्सक्यूज़ बना के जाएंगे तो हमें नुकसान होगा, हमारी टीम को नुकसान होगा, क्योंकि हम लोगों का प्रिपरेशन ख़राब हो जाएंगे वर्ल्ड कप का पहले. तो हम चाहते थे ये सब चीज़ को साइड में रख के आवर मेन फोकस इज़ ऑन अ क्रिकेट. जो भी हमें लिमिटेड रिसोर्स मिल रहे हैं उसमें हम बेस्ट करें और टीम को एक साथ लेके आगे जाए. तो डिफ़िकल्टी तो था ही, क्योंकि ईटिंग दोज फूड टाइम पे रूम पे खाना नहीं आ रहा है. आप रूम सर्विस ऑर्डर करते हो, इवनिंग को आता है,
and a lot of things happening. बट एट द सेम टाइम हम लोग वो चीज़ करते थे जो उस जहाँ पे हम लोग हंसते थे, सब एक दूसरे के साथ टांग खिंचाई करते थे, चाहे जूनियर हो सीनियर हो. और सो इस फन, एंड इसके साथ हमें बॉन्डिंग भी अच्छा हुआ, हमें एक दूसरे को जान पहचान करने का भी बहुत अच्छा मौका मिला. क्योंकि समटाइम्स होता है ना, आप सीनियर हो, सो यंगस्टर्स आपके साथ बात करने में हेजिटेट करते, तो उसी कल्चरल एक्टिविटीज़ में यंगस्टर्स को आपके साथ बात करना, उनका क्वेश्चन आपका आंसर करना, तो ये सब करके हमने टाइम निकाले. एंड इट वाज अ फन फॉर अस, बट एट द सेम टाइम इट वाज रियली डिफिकल्ट. सर्टेन डेज आई फील दैट अरे यार कहाँ फंस गए यार. पहले पता होता तो इस मे बी मैं कुछ सोचती थी जो ऑस्ट्रेलिया टूर के पहले कुछ ना कुछ करके भाग जाओ, क्योंकि इट वाज रियली डिफिकल्ट. बट जैसे हम लोग ग्राउंड पे पहुंचे एंड जिस तरीके से हम लोगों की टीम एज ए टीम परफॉर्म किया, when chips are down and we'll come back, then realize that वो bubbles में हम लोगों ने जो 15 दिन हम लोग क्वारंटाइन थे, एज ए टीम हम जिस तरीके से एक्टिविटी किया, उससे हमें कितना कुछ बेनिफिट मिला. सो ये वर्ल्ड कप क्या हमारा जेन्युइनली चांस है? एब्सोल्युटली बुरियादा, बिकॉज टीम बहुत अच्छे है. इज गुड bunch of cricketers and together where you have exciting youngsters like Sefali and Richa, and at the same time in a senior player like Mithali, myself, Harman, Smriti, है ना. खूब बहुत अच्छा इनके मिलजुल है. सब एक साथ हम ग्राउंड पे जा रहे हैं, परफॉर्म्स कर रहे हैं. हम चाहते हैं हमारी टीम लास्ट 3 साल में 2 वर्ल्ड कप फाइनल खेले. हम लोग डिफरेंट फॉर्मेट है, बट इंडियन टीम लास्ट 4 साल में 2 फाइनल खेले, 2017 एंड 20. सो टीम में दैट मीन्स स्पार्क है, मटेरियल है, जस्ट हमें वो बिग लैडर को हमें पार करना है. आई थिंक जो एक्सपीरियंस हमने गैदर किया है, होपफुली इस वर्ल्ड कप में हम लोग उस एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे. नाउ तो ऑलमोस्ट सबने उस एक्सपीरियंस कर चुका है जो वर्ल्ड कप फाइनल का प्रेशर क्या है. होपफुली यू एबल टू हैंडल द प्रेशर इन दैट डे एंड द नॉकआउट स्टेज. एंड डेफिनेटली हम उम्मीद करते जो ट्रॉफी हम लोगों के वार्डरोब में नहीं है, मतलब वार्डरोब इन द सेंस अपना शोकेस में जो नहीं है ट्रॉफी, वो ट्रॉफी रखना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट गोल. व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, I saw 97 World Cup final and Victory Lap. Belinda Clark was running at a Eden Garden. 80,000 crowd was sitting over there as a ball girl. मैंने देखा उनको भागते हुए ट्रॉफी लेके विक्ट्री लैप लेते हुए. तो वो अभी भी मेरा जहन में है. मैं चाहती हूँ वो चीज़ भी हम लोग करें यार. वुमेंस क्रिकेट का खुद का एक प्लेटफॉर्म बने, यंगस्टर्स के सामने एक हम लोग एक एग्जाम्पल सेट कर पाए जो ये स्पोर्ट्स में आए, खेले एंड इस लेगेसी को आगे लेके जाए. ऑल ऑफ अ सडन यू हैव स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग. हर मैच में आप रन बना रहे हो, वो बहुत हेल्प करता है टीम को. 50 ओवर्स में 275 जब इंडिया आपने 30 रन, द मैच दैट फिनिश्ड ऑफ आपने आगे खत्म किया. आपका वो 6 मुझे अभी भी याद है. क्या आपने दोबारा बैटिंग पे आपने ध्यान देना शुरू कर दिया? आई थिंक हम लोग मीटिंग किए थे, टीम मीटिंग हुआ था हम लोगों का, वेयर कैप्टन वांट्स मी टू कंट्रीब्यूट फ्रॉम माय बैटिंग. सो एंड एक और मीटिंग हुआ था, सौरभ सर ने मुझे बताया था जो आप बैटिंग पे कंसंट्रेट कीजिए क्योंकि आपका बैटिंग इज इम्पॉर्टेंट है टीम के लिए. तो फिर मैंने देखा दोनों कैप्टन की तरफ से एक ही व्यूज़ आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आई स्पोक टू आवर बैटिंग कोच एंड देन रेगुलरली मैं नेट में बैटिंग करना स्टार्ट किया. एंड नो बिलीव इन माई सेल्फ दैट इफ़ आई कैन ब्रिंग दोज 25-30 रन्स लास्ट में जाके वो मैच का डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. एंड I enjoy batting, but in between, sometimes as a bowler, you start thinking, कोई कर लेगा. I think that was a wrong set of ideas. But now I'm very serious because I wanted to contribute either as a batting, bowling or fielding because this is the biggest tournament. I don't want to, कोई एक बॉक्स भी अनफिल रहे, हर बॉक्स में मैं टिक करना चाहती हूँ. So, well, really looking forward for this tournament. I'll finish off there. All of us know how much she has done for Indian cricket. Thank you very much once again for talking to me. All the very best.